बुनियादी सवाल नहीं पूछते, हम जवाब देते हैं बुनियाद के साथ, और वो बुनियाद के साथ जो जवाब है वो आपके सामने है। पहला डॉक्यूमेंट जिसके बारे में जिक्र करूंगा, दैट इज बीजेपी's एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी। अब इनके नेता, विपक्ष के नेता कहते हैं, and I quote, there are occasions when obstruction in parliament brings greater benefit to the country. And then he said that the government is in majority in Lok Sabha, therefore there is no point in a debate. Government is in majority in PAC, therefore no point discussing in PAC. Therefore, obstruction is the only way, and it brings greater benefit to the country. I don't think that any statement made by any leader in the past 60 odd years has been so denigrating to parliamentary democracy as the statement made by Mr. Jaitley. It strikes at the root of Loktantra, at the root of parliamentary democracy. How can a leader say, because the government is in majority, I will not allow parliament to function? The whole purpose of parliamentary democracy is government by majority, which means it becomes an ideology of the minority that because you are in majority, people elected you, therefore we will not allow parliament to function. ये तो एक तौहीन है, जनता के जो फैसला है उसकी तौहीन हो रही है। और मैं समझता हूं कि विचार करके जेटली जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए। लेट द नेशन कम फर्स्ट, सत्ता की हवस को पहल नहीं देनी चाहिए, देश को पहल देनी चाहिए। The nation must come first, the lust for power later. अब मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आप चौकन्ना रह जाएंगे। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 2001 के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने उस समय कुछ 2 हफ्तों के लिए पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया था, और जेटली साहब ने उस समय क्या कहा था वो मैंने यहाँ बयान में रखा है, and I quote, this is December 12, 2001. What did he say? I make a direct charge against the opposition parties that they would not stand anywhere if the issue was discussed threadbare in Parliament. That is why they are not agreeing to discuss the CAG report and stalling proceedings in Parliament. How ironic. This is exactly what we are saying today. Discuss the matter in Parliament. You will be left nowhere because the facts will be out in the public domain. And the people will know that your allegations is nothing but a tissue of lies. फिर इन्होंने क्या कहा? तो फिर मैं italics पढ़ता हूँ. It was totally unacceptable that disturbances should become substitutes for discussion. I want to ask Mr. Jaitley, when he said it is totally unacceptable that disturbances should become substitutes for discussion, they were in majority in government. So why has he changed his view in 2012? Because he happens to be in opposition. Is this principled politics? Then what did he say? If there are any lapses, these should be corrected. If deliberate lapses are there, those responsible be held accountable. If there are no lapses, no doubt should be allowed to stay. Normally a discussion on a CAG report is undertaken after the PAC report. But if there are any doubts, we are willing for a discussion in Parliament. तो आज कैसे बदल गया? सत्ता के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, देश के लोकतंत्र को भी बर्बाद कर सकते हो। और ये लिखित रूप में है, ये को मैं सवाल नहीं पूछ रहा, ये मैं उनको जवाब दे रहा हूं। उनके कहे हुए जो बयानात हैं उसके आधार पे जवाब दे रहा हूं। This is one. The second, I was just handed over some questionnaire that the BJP has released for us to answer.
The questionnaire itself is false, and I will demonstrate it from what I'm going to distribute to you today. For example, the questionnaire says, the BJP chief ministers are essentially asked that the state must get its share of coal for its power generation and fair share of proceeds of auction. False. Statement is false. They should accompany, give us the documents on which they have made this statement. I'll tell you how it's false to come to the second compilation. Now I have given you the stand of Chhattisgarh, Rajasthan, West Bengal and Orissa. The second compilation, the thick compilation with the letters, because I've given you the letters. Okay, now, what does the Chief Secretary of Chhattisgarh say? And this was with respect to competitive bidding. When the UPA said, let's move on to a procedure of competitive bidding, what was their response in writing? He says the suggested policy change, that is competitive bidding, is likely to shift the new steel iron units from poorer inland states to comparatively richer coastal states. The proposal would therefore be detrimental to the development growth of iron and steel industry in inland states like Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh. Then he says through competitive bidding process, captive coal blocks to be allocated through competitive bidding process would be many. Only the financially bigger ones are likely to capture the available coal blocks, leaving the unsuccessful ones without any access to domestic coal. So they were opposed to competitive bidding. They wanted the captive coals to be given. Next, the only option available to the relatively smaller unsuccessful iron and steel units would be to depend on imported coal, the prohibitive cost of which in inland locations will make them unviable. हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. शेयर वेयर की कोई बात नहीं थी. हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. बड़े लोग ले जाएंगे, अमीर लोग ले जाएंगे, हम कहीं की नहीं रहेंगे. इंडस्ट्री छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी. हम कंपेटिटिव बिडिंग के खिलाफ आज सारे देश को कह रहे हैं कि ये कंपेटिटिव बिडिंग होना चाहिए. सारे देश को कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, और उस समय कह रहे थे कंपेटिटिव बिडिंग नहीं होनी चाहिए. The unsuccessful units in the building process will still be worse off. The proposed change in policy, that is competitive bidding, therefore, is expected to make the pipeline new projects unviable, resulting into slowing down of growth of domestic iron and steel industry for reasons of non-competitiveness in sourcing the essential input coal. In such scenario, the supply sale of commodity needs to be regulated rather than putting it on the competitive bidding route. Here is proof of the fact that they are telling lies to the people of this country. The state government therefore does not support the proposal and instead is of the view that allotment of captive coal blocks to iron steel industry needs to be continued as per extant policy. Needs to be continued. मतलब के captive coal blocks का जिस तरह से दिए जा रहे हैं वैसे ही देने चाहिए, कंपेटिटिव बिडिंग नहीं होनी चाहिए. और आज क्या पूछना है, आज क्या सवाल पूछा है इन्होंने? मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसे लीडर्स फोरम पे आके सवाल पूछें जो तथ्यों के खिलाफ है, जो डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ है. आज कहते हैं बीजेपी चीफ मिनिस्टर essentially asked the state must get its share of coal for its power generation. Is it anywhere? Is this statement anywhere in the letters? अच्छा, फिर इन्होंने एक और भ्रम चला रखा है कि भैया हम तो सिलेक्ट करते ही नहीं थे, हमारा सिलेक्शन से लेना देना क्या था, ये तो सब केंद्र सरकार से होता था. उसका आज मैं खुलासा करना चाहता हूं. अगला बीजेपी चीफ मिनिस्टर का चिट्ठी पढ़िए आप. क्या कहती है बीजेपी, उस समय बीजेपी चीफ मिनिस्टर 11 अप्रैल 2005 में, द प्रपोज्ड चेंज वुड टेक अवे द स्टेट्स प्रेरोगेटिव इन सिलेक्शन ऑफ द लेसी. असलियत क्या है? लेसीज इन्होंने सिलेक्ट किए, आरोप हम पे लग रहा है. ताज्जुब की बात है ना. एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा हक लेसी को कैप्टिव कोल ब्लॉक देने का, वही खत्म हो जाएगा. जब ये मीटिंग में बैठते थे तो जो कहते थे वो होता था.
जो ये चाहते थे इस एससी को मिले उसी को मिलता था। और आरोप कांग्रेस पार्टी को यूपीए पे लग रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं दस्तावेजों के खिलाफ। What is the next statement? It is therefore requested that the existing practice of allocating lignite mines be continued. अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि जो ये पिछले 4 हफ्ते में जो भी इन्होंने पार्लियामेंट में किया, झूठ के आधार पर किया। असलियत कुछ और थी और इसीलिए ये डिबेट नहीं चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये सत्य जनता के सामने आ गया तो गुजरात में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। ये सारी राजनीति, मैं इनको कहना चाहता हूं कि वाजपेयी जी का राजधर्म अपनाओ, राजनीति धर्म को मत अपनाओ। इनका धर्म राजनीति धर्म है, राजधर्म नहीं है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? जब वामपंथी दल वहां थे सत्ता में, तो उन्होंने क्या कहा, एंड आई कोट, 31 March 2005, the present system of allocation of coal block on the basis of recommendations of screening committee takes care of both the subjective and objective aspects of the projects for which coal block for captive mining is applied for. Supported captive mining. आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कैपिटलिज्म की कि भैया ये तो मार्केट हो रहा था, उस समय तो सपोर्ट कर रहे थे। और साथ में आगे क्या कहा, इन द प्रेजेंट सिस्टम व्यूज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स टू इंडस्ट्रीज। अगेन थिंग कि राज्य सरकारों के व्यूज चलते हैं जब कोल ब्लॉक अलॉट होते हैं। फिर आइए उड़ीसा के मुख्यमंत्री की चिट्ठी 22 जून 2002 में, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कहते हैं कि जिंदल स्टील को दिया जाए और किसी और का अलॉटमेंट कैंसिल किया जाए। मतलब कि डायरेक्टली एक चिट्ठी लिखना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश क्या कहते हैं कि चितरंगी में जो कोल शासन में है वो चितरंगी को इस्तेमाल करने दीजिए। ये इनके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और हम पे लग रहा है। और सारी चिट्ठियां मैंने रख दी ताकि कोई ऐसा ना कहे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दी। वो चिट्ठियां सारी एनेक्स्चर्स हैं, उसके जो मूल बातें उन चिट्ठियों में मैंने आपके सामने रखी। लास्ट, these are very interesting documents with reference to the CAG. Let us come to a document dated 9th March 2012. These are minutes of the exit meeting with the Ministry of Coal to discuss the performance audit and allocation of coal blocks and augmentation of coal production, held on March 9, 2012 at the office of the CAG, New Delhi. आपके पास है ये चिट्ठी, मिनट्स हैं। अब इसका आप दूसरे पेज पे आइए, लास्ट सेंटेंस आइए। आप नीचे दस्तखत देख सकते हैं, इट इज सरोज पोनानी, डायरेक्टर जनरल कमर्शियल 2 and Joint Secretary Coal, that is the CAG's office and the Coal Ministry. दस्तखत है, joint minutes हैं। Last sentence क्या कहता है? It is however remarked that estimates were being employed to project and emphasize a material issue and should not be construed as a core finding of the audit report. खुद कहते हैं, this is not a finding of the audit report. ये तो केवल हमने उदाहरण के तौर पे जस्ट टू एड्रेस द मटेरियल इशू, इनके दस्तखत हैं, तो कोर फाइंडिंग कैसे बन गई? अब हमें किसको बताएं? पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सकते, जनता को बता नहीं सकते, पीएसी में कहते हैं हमारी मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, तो बताएं किसको? तो तभी हमने हेडिंग में लिखा है, Why did the CAG change its mind? दूसरा, ड्राफ्ट मिनट्स
February 2012. Again signed by CAG as well as Joint Secretary Cole. Para 10. DAI, that is Director General Commercial, assured that the replies of the Ministry would be considered and incorporated appropriately while finalizing the audit report. देख लीजिए audit report में क्या है क्या. Third document, 15th March 2012. हमने चिट्ठी लिखी, ये मिनट्स नहीं, ये कोल मिनिस्ट्री की चिट्ठी है. And fourth paragraph of that letter says, while recasting the relevant portion of the draft performance audit report, you may please take into account the views expressed in the para above. क्या है views expressed in the para above? One, वापस beginning में आ जाइए, शुरुआत में आ जाइए. Geo mining conditions, size of property, seam thickness, mineable reserves, geologically disturbed area or not. These are the factors which go into finding out. Method of extraction, open cast mining or underground mining. In case of open cast, stripping ratio, kind of mechanizations are the main factors on cost components. Nature of land, forest land, government land, tenancy land. Surface features of land, number of villages, and the number of people who are to be rehabilitated. Invariability of infrastructure near the project site. Railway siding है या नहीं, transportation facility है या नहीं, plus many other factors. Cost production will vary to a large extent, even between mines located in the same area. Forget about mines located in different areas. Even in the same mine, the cost factor will. So while recasting the relevant portion of the draft performance audit report, you may please take into account the views expressed in paras above. We would appreciate if you could organize another meeting to discuss the revised draft performance audit report, particularly the portion referred to above. No meeting. देखिए, हम हर चीज में पारदर्शिता चाहते हैं और हम सब संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हैं और कभी हम अपशब्द उनके बारे में नहीं कहेंगे. लेकिन हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार में भी होनी चाहिए, बाकी संस्थाओं में भी होनी चाहिए. पारदर्शिता तो हर संस्था में होनी चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए. पार्लियामेंट बहस, पार्लियामेंट तो फोरम है जहां बहस होनी चाहिए. लेकिन मुझे बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से डिबेट को हम एक ऐसे दौर पे ले गए हैं जहां कोई तथ्यों की जगह नहीं, सत्य की जगह नहीं, झूठ के आधार पे डिबेट होती है. जो मर्जी सवाल पूछ लो बिना तथ्यों के, बिना बुनियाद के, और फिर एक भ्रम फैला दो, फिर टीवी चैनल्स में चला दो और ऐसे दिखाओ कि यहां मतलब के खुलेआम, मतलब के सिलेक्ट इन लोगों ने किया. कोल ब्लॉक एलोकेशन ये चाहते थे, एक्सटेंड पॉलिसी का कंटिन्यूएशन ये चाहते थे, कंपेटिटिव बिडिंग का इन्होंने विरोध किया और आज आरोप हम पे लग रहा है. तो मैंने सोचा कि आज इस मौके पे आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखें ताकि आप खुद फैसला करो, देश की जनता फैसला करे सच क्या है और झूठ क्या है. Yes. Why did the state governments come on board? Let me tell you that also. We persuaded them. They were dead opposed to it. How did we persuade them? They said that once the competitive bidding takes place, all the money that is earned will go to the state government. That is the compromise. Sir, that means that जो भी पैसा आएगा competitive bidding में, वो सारा राज्य सरकार को जाएगा. इस आधार पे वो आए. But it doesn't take away from the fact that they were dead opposed to it. तब तक तो सारे ब्लॉक दे दिए गए थे. जब तक ये आए, after all the bill was introduced in 2008, तो तब तक तो सारे ब्लॉक 68 तो allocate हो ही चुके थे, and they came on board after 2008. So this is also diverting the issue. The contemporaneous evidence that I have shown to you itself says we choose the lessees. We have the right to choose the lessees.
Captive coal blocks must be allotted. Competitive bidding is not allowed. It will destroy our industry. What else do you want? Sir, just wanted to understand what are the exact allegations against CAG that they did not understand? No allegations. This is only to point facts for issues. That they did not understand the issue. No, I will not make any comment about the CAG. I think that you should. But what exactly are you saying on CAG that they did not understand? Reflect what I'm saying. Yes. Yes. करते हैं नहीं मैं देखिए अच्छा कोई ऑफिशियल बयान बिल्कुल ये गलत है कोई ऑफिशियल बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आया अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कहेगा तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान आज तक हमने सीएजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा मुझे एक भी बयान दे दीजिए सरकारी प्लेटफॉर्म से हमने कभी कहा पिछले क्या 2004 से लेकर क्या 1998 से लेकर आज तक हमारा इतिहास रहा है हाँ ये आज भी क्वेश्चन था पर हमने कोई ऐसा ना हम पूछना चाहते हैं कि भाई 2004 से क्यों शुरू होता है ये कोई गलत बात नहीं है वो जवाब दे देंगे इसमें क्या है पार्लियामेंट में होना चाहिए बीएससी में चर्चा होनी चाहिए हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो अगर आप चर्चा नहीं करने देते तो हम कहाँ जाएं हमने कभी सीएजी को इडियोटिक नहीं कहा जो अरुण शोरी ने कहा था हमने सीएजी को कभी अनएथिकल नहीं कहा जो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था हमने जीए के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे जो अरुण जेटली साहब लगा रहे थे हमने आज तक नहीं ऐसी बात की और करेंगे भी नहीं हमारा मतभेद हो सकता है कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं कि ये सही है ये गलत है लेकिन इंस्टीट्यूशन से कैसे मतभेद होगा situation has moved on beyond what the BJP has raised and what the Congress has raised. Now the issue has come to the rights and wrongs of particular developments, whether it was done in a fair way, whether there are any problems with particular you know very well, and that's exactly what the BJP stand was in telecalls. If there is any individual allotment, the processes of law will take their course. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. If somebody has misinformed, deliberately, willfully misinformed, and somebody has willfully through indirectly or indirectly sought an allocation of coal based on misrepresentation, those issues will be taken up. We have never denied that, and it is we who are doing it. The beauty is that we have started this process much before the CAG report came. 26 blocks have already been cancelled. We were not waiting for the CAG report of the BJP to stall Parliament. Sir, there are just 2-3 questions that I have because you've given the minutes. Nowhere in this exit meeting, because your exit meeting is basically an occasion for you to respond to the Auditor General's points of view. The point that you're making this entire thing about opposition's hypocrisy, your coal secretary nowhere points out the documents that you have been saying on why you went ahead with the competitive bidding. Sure, that is one question. What I didn't understand the question. Here you have given a full document saying opposition's hypocrisy, basically nothing, saying why the reason, why you could not go ahead for competitive bidding because states were opposing. In this exit meeting minutes, which you have now released, right. Nowhere in this does Coal Secretary explain the result, the whole basis for why. This is 2012 document. It's a 2012 document. Yes. Yes, so 2012 was the situation. Based on what CAG was basing on, what is CAG's basis of attacking the government, that Prime Minister Manmohan Singh didn't do enough. No, CAG has never said any of that. Don't put words in my mouth. Don't ask a question which is not reflected in the report of the CAG. Why the government did not, through an administrative order, go ahead with the decision. I'll tell you, see, I can give you, I can sit with you. And your Coal Secretary out here does not defend the government's point of view at all in this. This is not saying when we go to the CAG and have a meeting, you don't have to defend the government's point of view. This is not the procedure. If you have some knowledge of what happens between the CAG and the relevant ministry, there is no defense or offense. They want to find out the facts.
right? And we give as much facts as possible. No facts were given about... Facts were not given in this document. Facts are given to the ministry, through the ministry by writing letters, and there will be hundreds of them. So that's not an issue. This is only a reflection of at the end of the meeting, they say all these facts that are being stated are only for the purposes of making it just a material issue, which is not a finding. But it became a finding. And that's what TV channels were, talking about, has been talking about for 4 weeks now. Anyway. And okay, if that is the point, then the follow-up to this is that as you rightly said, wherever there has been a default, someday they will be cancelled. Those allocations can be cancelled. It is not for me. This process is on. There is an interministerial group. On the other hand, there is the CBI, taking account of those who it thinks should be investigated. Whether it's right or wrong is another matter. But at the government process must go on. At the government level, somebody has to be held accountable. Now, one second. Look, this is exactly what is happening. If I give wrong information, supposing I say that you can get admission to this institution provided you belong to A, B or C. You give a false affidavit and you get admission. How is it the institution's fault? Please tell me. If you have given a false affidavit, how is it the institution's fault? We later get to know it is false, it will be dealt with. The same thing here. If somebody gives all false information, how is it the screening committee's fault? नहीं भैया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती हैं, वो बैलेंस शीट देती हैं. अगर वो बैलेंस शीट ही गलत हो, उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कभी कोल ब्लॉक पहले थे या नहीं, वो कहते हैं नहीं थे. तो हर आदमी के लिए कोई 125 एप्लीकेंट है, हर के लिए तो कोई जानकारी नहीं करेगा ना. ठीक है ना, ये प्रोसीजर होता है. आप आज कह सकते हो इन हाइंडसाइट कि भैया इसको और भी आपको स्ट्रिक्ट करना चाहिए था, हो सकता है, लेकिन आज आरोप लगाना ये तो गलत है. सर, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि बहुत सारे जो अलॉटमेंट्स हुए हैं उसमें पता नहीं है कि कौन सी कंपनियों को किस आधार पर दिया गया. कि मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस दे दी, कौन अलॉटमेंट करा रहा था, आपको पता चल गया. सर, वो तो जवाब मिल गया. नहीं, ये तो आपको मालूम है कि आप ये भी गलत बात कर रहे हो, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट की जजमेंट है. पर जजमेंट ने कहा है फ्रॉड है, ये गलत है, डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करता, और 2.5 लाख रुपया उसकी पेनल्टी लगी है उस PIL में. नहीं, उसमें तो हुआ ही नहीं एलोकेशन, कोई दूसरे की गलत आपको कैंसिल, MOU has been cancelled. मिस्टर सिंबल, भैया डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बात कर लीजिए. आप दीजिए मुझे डॉक्यूमेंट, आप दीजिए डॉक्यूमेंट, मैं आपका जवाब दूंगा. डॉक्यूमेंट दीजिए, ऐसे सवाल मत कीजिए. See, again, these are, what is an FIR? What is an FIR? What is called the first information report. He's not an accused. He's not been charge sheeted. Right? So is this the law in our country? कि SIR तो मेरे खिलाफ कल को FIR करेगा, बोले कि साहब किसी ने आरोप लगाया, इस्तीफा दो. वैसे मेरे खिलाफ करे तो मैं दे ही दूंगा. तो ये कहने की बात है कि ऐसे सवाल ठीक नहीं है. कोई FIR करता है, इसका मतलब तफ्तीश शुरू है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू है. अगर वो इन्वेस्टिगेशन किसी हद तक पहुंचती है और चार्जशीट होता है तो फिर ये सवाल हो सकता है. No, but doesn't propriety, sir, does not. There was a specific charge from the same forum from the Congress that Ajay Sancheti is one of the benefactors when coal block allocations took place in Chhattisgarh. उसका भी इन्वेस्टिगेटर होना The चाहिए. BJP today has said that that happened in the state through a global tender. Do you buy that defense? And what happens ऐसा है if it goes जब through CAG की रिपोर्ट मध्य प्रदेश पे लागू होती है या झारखंड पे लागू होती है या छत्तीसगढ़ पे लागू होती है, then all the figures are hypothetical, quote unquote of Mr. Jaitley. जब हमारे पे होती है तो they are real. Mr. Sibal, Mr. Narendra Modi yesterday said, Mr. Narendra Ajay Sancheti incidentally was not named by us. Go through the minutes, no names were given. That's what happened. There is a press release by. There is a press release at all. There is a very clear press release by Indian state. Anyway, it's all right, doesn't matter. Chaliye. Mr. Sibal, Mr. Narendra Modi yesterday said that the Congress is in a habit of fooling people, and like the Akash tablet is in
Akash only, and yet it has not come to the ground. I'm surprised at Narendra Bhai. आकाश एक ऐसा वेंचर है जो मैं समझता हूं कि विश्व में हमने एक पहल की है। टैबलेट का प्राइस पॉइंट हमने विश्व में तोड़ दिया है और सारे विश्व में इस बात की चर्चा है और गुजरात में आलोचना है। हम तो बच्चों के भविष्य के बारे में 24/7 सोचते हैं कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो। और जहां नरेंद्र मोदी जी का घर गुजरात है, वहां बच्चों का भविष्य क्या हुआ? बच्चों के भविष्य का, मासूम बच्चों के भविष्य का। और मोदी जी ने क्या किया? मौन रखा। 2002 के बाद तो मोदी जी को ख्याल करना चाहिए कि हम प्रयास करते हैं, दिल से प्रयास करते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे हृदयों में स्नेह है। हाँ, राजनीति में मोदी जी बड़े अमीर हैं लेकिन दिल के गरीब हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें कहने का, लेकिन उनको ये शब्द नहीं कहने चाहिए क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 5-7 सालों में हर बच्चे के हाथ में आकाश हो। और 22 तारीख को मैं गुजरात जा रहा हूँ, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करूँगा और आकाश का वर्जन 2 उनको सौंपूंगा 22 तारीख को आकाश का वर्जन 2 उनको सौंपूंगा ताकि वो खुद फिर उस पर विचार करके अपने बयानात वापस करें। सर, No, I'm not going to comment on any of that. But yeah, देखो, this is a forum in which we want to give information to you so that information gets to the people. We are not against anybody. We don't want to criticize anybody. We just want to put the flags before you. It is for the people of India to decide. sir, coming back. नहीं, मैंने कहा कि वहाँ अपोजिशन के मेथड क्या वो खुद कह रहे हैं कि सिलेक्ट ही तो हमारा था, सिलेक्शन तो हम करते थे। आप ये हक हमारे से कैसे ले सकते हो, कैसे चुन सकते हो? मासूम नहीं है भैया, आपको मालूम नहीं है, हम बिल्कुल मासूम नहीं है, हम बड़े मैच्योर हैं। ठीक है ना सर? अब संसद भी तो चलाना होता है। सर, अब इस सिचुएशन, सर अब पीएससी की प्रोसीडिंग स्मूथली बोलेंगे? हम तो चाहते हैं सारी प्रोसीडिंग स्मूथ हो, लेकिन मन की भावना स्मूथ होनी चाहिए ना पहले। Sir, coming back to the issue of the FIR minister, Rajendra Datta, it's not just a simple case of FIR, somebody reported and his name has been lodged. CBI has lodged an FIR. That's correct. The charge against him and his family is that they have concealed crucial information that would have made him ineligible for getting a coal block. Is it not? That will be dead. Is he not morally bound to resign from the minister? Number one. By the same logic, then even Raja, nothing else is good. Why has Raja stepped down? No, 1 second. An FIR, as I said, whoever lodges it, is the starting point of an investigation. That investigation has to be completed. At the end of the day, the CBI itself may say that that the explanation is acceptable. So I don't know. No, FIR is not prima facie. Charge sheet is prima facie. There's not these little nuances of law. I have little understanding of. With great respect. थोड़ा सी मुझे जानकारी है. थोड़ी सी जानकारी है. Prima facie is when a person is charged, not before that. Take it. Mr. Sibal.